बात का गौरव है। मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। माननीय मुख्य मेहमान, आदरणीय शिक्षको અને મારા પ્રિય મિત્રો, સૌને પ્રણામ। આજે 26મી જાન્યુઆરી આપણો ગૌરવ પ્રજાસત્તાક દિવસ છે। આ દિવસે આપણું સંવિધાન અમલમાં આવ્યું હતું। ભારત એક લોકશાહી શક્તિશાળી દેશ બન્યો। મિત્રો, ભારત માત્ર દેશ નથી, તે આપણી ઓળખ છે। આ દેશે આપણને ભાષા આપી, સંસ્કૃતિ આપી અને એકતાનો પાઠ શીખવ્યો। અહીં વિવિધ ધર્મ, વેશ, ભાષા હોવા છતાં આપણે બધા એક છીએ, ભારતીય છીએ। આઝાદી આપણને સહેલાઈથી મળી નથી। ભગતસિંહ, મહાત્મા ગાંધી, સુભાષચંદ્ર બોઝ જેવા વીરોએ દેશ માટે પોતાનું જીવન સમર્પણ કર્યું। તેના બલિદાનના કારણે આજે આપણે સ્વતંત્ર આકાશમાં શ્વાસ લઈ રહ્યા છીએ। દેશભક્તિ એટલે વડીલોનો આદર કરવો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત। Teachers, villagers and all my dear friends, my name is Rinku. Today we are celebrating Republic Day, a very special day for our country. On this day in 1915, the Constitution of India came into force. It made India a republic, meaning that the people have the power to choose their leaders. Our freedom fighters worked hard for India's independence. They gave their lives to make India free. Today we honor their sacrifice. Republic Day is a reminder of how far we have come as a nation. Teaches us the importance of unity, peace and democracy. की सजा सुनाई है। यह तो बड़ी खुशी की बात है। व्हाट, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई और तुम खुश रहे हो? अभी तो तुम्हारी एज ही क्या है? इस एज में तो आदमी ने ड्रीम डिजाइन करता है और उसे पूरा करने का ट्राई करता है। ड्रीम जी तो मैंने बचपन में ही देख लिया था। ये देख रहे हैं आप? इस मिट्टी को तुम ड्रीम बोलते हो? हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जलियांवाला बाग की मिट्टी है। इसे मैं हमेशा मेरे पास रखता हूँ क्योंकि ये मुझे मेरे स्वप्न, मकसद और हुजूर की याद दिला सके। उसका नाम है आजादी। हमें लगता है कि तुम्हें इस फांसी की सजा से आजादी मिल जाएगी। जब बेटा खून शहीदों का तकदीर पलटी कौमों की, मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी यूं ही नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, तुम हमें एक बार अपोलॉजी लेटर लिख के दे दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी न मिले। जब मैं 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह हंसते हंसते शहीद हुए थे। जब मेरे गुरु करता खिल ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, तो जो बच्चा कुर्बानियों के पीछे पला बड़ा हो, तो आप सोच भी कह सकते हो कि वो बच्चा आपकी सरकार को माफीनामा भेजेगा। कल 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर आज रात तुम्हारा इरादा बदले तो मुझे बता देना, मैं पर्सनली जाके ऑफिसर से बात करूंगा। दिल से निकालेगी ना, मरकर भी वतन की उनकत मेरी मिट्टी से ली खुशबू अपनाएगी। भगत सिंह, योर लास्ट विश, कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी? सर्फ रोशनी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो बाजू का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, अभी से तुझे क्या ही बताए क्या हमारे दिल में है। વિચારવું પડશે. ધારાને કહેવો તો દેવો વિચારે છે અને દેવોને કહેવો તો ધારા વિચારે છે.
તમારા માટે ભોજનની વ્યવસ્થા તૈયાર છે. તમારે તમારા માટે બે પક્ષ આપેલા છે, એકમાં દાનવ ભોજન કરશે અને એકમાં દેવો ભોજન કરશે. તે તમારે કોણીમાંથી હાથ વાળ્યા વગર ખાવાનું છે. કોણ બુદ્ધિશાળી છે? આ બ્રહ્માજી જેવો જ બુદ્ધિશાળી છે.